Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is comprehension paragraph number 1 and 2 answer. Dear student, आज हमने comprehension paragraph करने हैं आंसर, लेकिन इसको रीड करने से पहले मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताना चाह रहा हूं कि कंप्रीहेंशन पैराग्राफ क्या है। आपको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ एक दिया गया होगा और उसके साथ क्वेश्चन दिए गए होंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जी को क्वेश्चन दिए हुए हैं और पैराग्राफ में जैसे ही सेंटेंस लिखा गया होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट, समटाइम हमें उन सवालों के जवाब अच्छे तरीके से जो है वो बनाने पड़ते हैं, उनकी तरतीब देनी पड़ती है। आप कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने से पहले उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से एक दो दफा रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होंगे। अब आपने बहुत से क्वेश्चन के आंसर जो है वो पैराग्राफ में हमारे पास सही तरीके से नहीं दिए गए होते, उनको फिर आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसकी तरतीब बना ली है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को रीड करूंगा आपके लिए। अबाउट 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously. A son generally followed the trade of his father, but nowadays one can take up a trade that one likes. The students who make the right choice of profession are always successful. For the right choice of a profession, there should be some definite aim. The students who do not have any definite aim suffer a lot in the end, as they have a difficulty in finding employment. In choosing a profession, the teacher and the parent play a very important part. The teacher keeps an eye on his pupils. He studies their habits, so he can guide his people to the right path of life. Dear student, ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन दिए गए होंगे। इन क्वेश्चन को हमने रीड कर उन पैराग्राफ में आंसर को फाइंड करना है और फिर उनका जवाब देना है। पहला सवाल है, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन 60 years ago? About answer question number 1. About 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously. Question number 2. Why did the people not choose the profession seriously? Answer. A son generally followed the trade of a father. Question number 3. Can a student of the present time choose his profession freely? Yes. A student of the present time can choose his profession freely. Question number 4. What is the advantage of the right choice of a profession? Answer question number 4. The students who make the right choice of profession are always successful. Question number 5. How can a student choose his profession rightly? Answer. For the right choice of a profession, there should be some definite aim. Question number 6. What will be the difficulty of a student who is reading without a definite aim? The students who do not have any definite aim suffer a lot in the end, as they have a difficulty in finding employment. Question number 7. How can a teacher help his pupils in making a choice of profession? Answer. The teacher keeps an eye on his pupils. He studies their habits so he can guide his pupils to the right path of life. Paragraph number 2. Making pottery on the potter's wheel is called throwing. The thrower is a very skillful workman, but there is another method of shaping articles out of clay. Molding. A plaster mold is made and the clay is pressed into it. This is a quicker and less difficult way to make things like handles, but all the most beautiful pottery is thrown. When a piece of pottery is taken off the wheel, it is put aside to dry, after which a design may be painted on it with a special color that will stand great heat. It is then ready to be fired. This is done in a large oven or kiln. The pieces of pottery are placed in other metals called cinders so that the flame cannot touch the pot. अब इनके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज throwing?
Making answer, making pottery on the potter's wheel is called throwing. Question number 2. What is the other method of shaping article? Molding is another method of shaping article. Question number 3. What is the advantage of molding? Answer. This is a quicker and less difficult way to make things. Question number 4. How does the potter make designs on the pieces of pottery? The potter makes designs on the pieces of pottery with a special color. Question number 5. How are the pieces of pottery packed in fire? Answer. This is done in a large oven or cave. The pieces of pottery are placed in earthenware tub called sagar. Dear student, ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 और 2. आपने अच्छे तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन थे उनके आंसर को उस पैराग्राफ में देखकर जो है उनको आपने अच्छे तरीके से उनका आंसर देना है और उन क्वेश्चन के आंसर रिलेवेंट होने चाहिए. उससे हटकर जो है वो फालतू कोई बात नहीं दी जानी चाहिए. आई होप कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आई होगी बात. अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पर्सनली मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं वहां पर आपको जवाब देने के लिए मौजूद हूँ. इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे.